हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सोनी के एक होम थिएटर सिस्टम के बारे में विच आई परचेज्ड वे बैक इन 2020 अगस्त एंड इट्स बिन मोर देन 2.5 years नाउ। उस समय ये सिस्टम नया नया आया था एंड एट द टाइम व्हेन आई ऑडिशनड इट इन द क्रोमा स्टोर इन एम्बियंस मॉल गुड़गांव, तो साउंड बार्स के मुकाबले ये मुझे सिस्टम ज़्यादा better लगा because of the performance that it gave. So I just wanted to share my overview and my opinion that if you are on a budget of, let's say, 36,000 or somewhere around that, then you can easily consider this system, home theater system, even in this today's days and age. तो ये सोनी का होम थिएटर सिस्टम है जिसका मॉडल नंबर है HT-S500RF. So this is the sound bar. ये sound bar system है. That means the front, left and right channel, they are all encompassed in a sound bar style speaker setup. तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं, in the middle you have the center channel which has one full range driver. On the left, this side, you have another channel which is your one full range driver with 1-inch tweeter, and on the right also you have one full range driver with 1-inch tweeter. तो सेंटर में कोई ट्वीटर नहीं है. ऑन द लेफ्ट एंड राइट चैनल यू हैव ट्वीटर्स. एंड मैं आपको मॉडल भी ये दिखा देता हूँ, विच इज़ HT-S500RF एंड इट्स 5.1 चैनल 1000 वॉट्स. वही लिखा होता है बट होता नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा. HDMI ARC, Bluetooth, USB inputs, and you can connect your speakers, rear speakers also. So this is center channel, left, right. It also comes with a subwoofer which is a wired subwoofer, जो कि है ये वाला. This is a wired subwoofer. अभी मैंने म्यूट करा हुआ है. And if we just show you the rear speakers, this is the left rear speaker and this is the right rear speaker. So this 1-2 subwoofer and the soundbar home theater system itself. अब ये 1000 watts क्लेम करते हैं दैट इट्स 1000 वॉट्स. एक्चुअली में ये 1000 वॉट्स कोई भी सिस्टम नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम रियल 1000 वॉट्स नहीं होते, वो जस्ट इन्फ्लेट करके बताया जाता है. इफ़ यू सी द बैक ऑफ द सबवूफर, इट रेट्स इट एट 140 वॉट्स, राइट. तो 1000 वॉट्स प्योर RMS जो होता है वो आपको बहुत हाई एंड सिस्टम्स में मिलता है. ये 1000 वॉट्स क्लेम करते हैं. इट गेट प्रीटी लाउड फॉर द रूम. बट बात करते हैं अब इनके supported formats की. So it supports DTS, it supports Dolby Digital, it doesn't support Dolby Pro Logic, it doesn't support Dolby Atmos, it doesn't support Dolby what do you call it, DTS X2 or any other fancy format जो आजकल आपको आते हैं systems में. But actually जो आपका Dolby Atmos जो है, जो अभी the most advanced audio कोडेक विच इज़ देयर अभी इन द मार्केट, उसके लिए आपको साउंड बार अगर आप फिर गो एंड परचेज, तो वो कम से कम अराउंड अगर आप अच्छी में जाते हैं तो 60-70,000 तो आप लेके चल लो. एंड देन यू नीड टू हैव अ TV विच ऑल्सो सपोर्ट्स HDMI EARC विच स्टैंड्स फॉर एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल. तो मैंने कई जगह देखा है कि वो एटमॉस, डॉल्बी एटमॉस की जो बैंडविड्थ है वो HDMI ARC पर नहीं चलती, बिकॉज वो HDMI ARC थोड़ा सा लिमिटेड होता है. HDMI EARC पर Dolby Atmos फंक्शन प्रॉपरली करता है. तो माई TV doesn't have, it's an old TV, it's an HDMI ARC setup. तो ये अभी HDMI ARC से कनेक्टेड है. All the rear speakers also, they are wired, they are not wireless. So ये wireless system नहीं है. But if you talk about the output, which will come to in next few minutes, आपके अगर स्टैंडर्ड लिविंग रूम साइज़ है 10x20 और इस थोड़ा बड़ा भी है, तो इट विल बी मोर देन इनफ बिकॉज इट गेट्स रियली लाउड और एंड इट विल यू विल एंजॉय वॉचिंग मूवीज़ ऑन दिस सिस्टम. सो विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स play a song which is NCS, non-copyright music only, and it will be as always Superhero by NCS. So let's go ahead and play the song. Give me a minute. And
and this is at 15 right now, so I'm just unmuted it. Just give me 1 second. Just give me 1 second. मैंने जो रिसीवर का वो है वो मैंने ये ब्लूटूथ पर कर दिया गलती से इनपुट को, so we'll just change it. So this is right now at 17 and gold state 50. And one more thing guys, before we proceed ahead, this is the remote. तो इसके ऑडियो फॉर्मेट्स में you get auto sound, you get cinema. Right now it is working on cinema. You have music, you have voice, and you have a night mode. And then you have various subwoofer level also you can adjust through this remote. It goes till 10. And then there are very subtle functions, like you can adjust the level of the rear speaker output as well. Basic functional remote है, ज़्यादा complex नहीं है. But in terms of the audio formats, right now it is working on cinema. It also has auto sound, cinema, music, voice, and night. Voice mode में it is, as per my experience, it doesn't make much of a difference. It is supposed to enhance the dialogues, but वो dialogue enhance नहीं करता है. For me it sounds more or less the same. So right now it's running on cinema mode, and its volume is 22 out of 50. So guys, as you saw, the output is really good. But yes, in terms of the formats, it is pretty much limited in this present day and age. अभी आपको Dolby Atmos, DTS:X and बहुत से other formats वाले systems मिल जाएंगे. But like I said, even in 2023, if you're on a budget of let's say 36,000 or 30 within 40k, अभी आज Amazon पर इसका price 40k के अंदर ही है. So if you are planning to purchase a soundbar system, 5.1 wired soundbar system with great power and sound clarity, then you can definitely consider this system as one of the good options. So I hope you liked the video, and in case you did, please do like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next video. Thank you.